have taken land in Arunachal Pradesh to establish industries in OilPalm. So very, very positive aspect. I'd like to thank both the industries for taking it up to 3F and which have taken land. Mizoram industry expansion and new industry in Mizoram was also taken off. So within 90 days, within 100 days of our conference, establishment of 3 industries in Northeast shows the offtake, shows the outreach, and shows the potential the OilPalm should be for favor. I would like to touch upon Telangana also. We've seen a presentation of Telangana. The amount of enthusiasm which is in Telangana, and Sumesh Kumar has promised me, in Government of India, that they alone will be taking at least 5 lakh hectares and therefore can go over 10 lakh hectares for the time to come. And I can assure them, on behalf of Government of India and the Government Minister, please take a step forward for all the states. Whatever best you can do, please go ahead for this thing. Funds shall not be the bottleneck. All necessary steps will be taken by Government of India to provide the requisite fund, which has been assured as part of the scheme, to take to a maximum level which can be reached. At this juncture, I would like to touch upon 1 or 2 points which is very important. Funds is not a bottleneck, and as far as scheme controls which have come in, initially for sprouts, support of 12,000 rupees per hectare was there. Now the support of 29,000 rupees for the imported properties is there. So increase of more than twice has never been seen. The scheme has been formulated in terms of which can be implemented. One aspect which we have been hearing from industry, different stakeholders, that money which used to flow used to be in the government treasury for a certain period, and if the money is not flowing to the farmers at the right time, then to other farmers is not there. A special mechanism in this scheme of central small scheme plantation rate, wherein a escrow mechanism can be made, and all the funds required from Government of India will go to that escrow mechanism. So that the time lag in terms of expenditure is not there. Those arrangements have been made in terms of, and I'd like to inform that after the conference was not October, more than 11 states have signed an MOU which is required for the viability gap funding, which is part of this scheme controls. I would like to also touch upon one of the important bottlenecks which was anticipated, and I would like to mention what the steps government is considering regarding this thing. OilPalm sprouts was talked about in the last conference that can be one of the bottlenecks for the availability. So 4 strategies being implemented regarding OilPalm sprouts. So domestic production increase is major thing as a part of the scheme. For OilPalm nurseries, major support of 50 lakh plus and everything is coming. And I'm happy to report that large number of states in the action plan are coming with a new nursery. Indian Institute of OilPalm Research is supporting all these state endeavors, and through a massive drive from this thing, all the domestic production increase which can take place in the OilPalm will be supported, not only funds, in terms of technical support, all this thing. But by the time it takes time, and maybe import material could be thing, so I'd like to inform that under exempt policy, major changes have been done. Now, if any industry, any state or any organization wants to apply for import under exempt policy, our team has mandated within maximum 10 working days of the application, necessary permission shall be given. And not only permission shall be given, initially the time period was 6 months, that permission will be valid at least for 1 year. And I'll call upon all the organizations, state and different organizations, that apart from 1 year, if you can make your business plan, what type of imports you want to have for next 5 years, and you can submit your action plan for the next 5 years, Government of India shall consider the action plan and go in for this extension, so that you can plan your imports and everything for next 5 years by the time the domestic production coming to that level which is required. Apart from that, I would like to assure you from behalf of Government of India that necessary conversion, necessary talk, necessary meeting has been held with most of the embassies. So whatever support is required to the embassies of India and those countries for imports of OilPalm seeds and sprouts shall be issued. I just mentioned few of these aspects, the purpose in this welcoming speech, that whatever all is required to take off this scheme, in order to take off this scheme, to reach a new successful milestone shall be sure. I wish this conference a success. I am confident that the deliberations which happened in the conference in Northeast, in Assam, fresh deliberations will happen this week. All the ideas
Please make your ideas, make your suggestions for faster implementation scheme and ensure you are getting those rural benefits. These words माननीय कृषि मंत्री जी का और राज्य मंत्री कृषि का पुनः अपनी ओर से सबकी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत आभार करता हूँ। जब आपके नेतृत्व में एक मॉडल स्कीम साबित होगी, स्कीम बनना, क्रियान्वित करना, कैसे इसकी कंट्रीब्यूशन करके और निश्चित तौर पे सफिशिएंसी और इंक्रीज इन एरिया एड्स टू not only providing the money and service and the imports of ముందట రావట్లేదు చూడు లేదు సార్ లైవ్ అదే వస్తుంది సార్ పైన రావట్లేదు ఎల్ఈడి Director General ICAR Government of India to give his introductory remarks. Thank you very much. చిన్న सम्माननीय कृषि किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, सम्माननीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार भाई कैलाश चौधरी जी, सम्माननीय कृषि मंत्री तेलंगाना श्री निरंजन रेड्डी जी, सम्माननीय पी प्रसाद जी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर केरला, डॉक्टर पी रेड्डी, चेयरमैन रैतु बंधु, संजय अग्रवाल जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, सुमेश कुमार जी, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना, सुभा ठाकुर। मैं अपनी तरफ से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से भारत सरकार के कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग की तरफ से आप सबको स्वागत करता हूं, अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। विशेष रूप में सम्माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपके अगुवाई में दिशा निर्देश में ये प्रोजेक्ट का प्रस्तुति तो किया गया और इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आपने आगे आकर दिशा निर्देश दे रहे हैं और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बाकी जितने वरेण्य व्यक्ति विशेष, सम्मान्य व्यक्ति विशेष मंचासीन हैं, आप सबको स्वागत करता हूं। और इस सभागार में उपस्थित समस्त महानुभाव, विशेष रूप में इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, राज्य सरकार के समस्त ऑफिसर, किसान मित्रों एवं हमारे वैज्ञानिक मित्रों, आप सबका और मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव। Actually, there was another meeting which was held in Guwahati, which was again chaired by Honorable Minister, and that was involving all the state government officials. In fact, several ministers were also present in that meeting. The objective of this meeting was to go to South and also discuss with all the stakeholders once again to see that the whole process of implementation is accelerated as we go along. You all know that this is a kind of area where we are deficient, the country is deficient. We are importing edible oil to the tune of 15 million tons and almost 60-65% of it is palm oil. So given this, we need to go for import substitution as advised by Honorable Prime Minister. So that is how this scheme. Subsequently, under the overall guidance of Honorable Prime Minister, it was actually finalized and now being implemented. This is one scheme where the policy has taken into account the scientific evidence-based approach to and integrating that with all the in fact technology aspects of the program. The OilPalm, as we all know, that it's a technology intensive activity and crop. This needs quite a bit of interventions
In fact, after thorough deliberation, as Mr. Sanjay Agrawalji highlighted, that all aspects of the requirements of the farmers have been actually addressed in the scheme itself. Whether it is a requirement of machines for various operations, so mechanized operations, whether it is a micro irrigation system, particularly drip irrigation, whether it is intercropping, whether it is seed garden, which also has highlighted, indigenous seed gardens which are there but quite deficient in terms of supply, so you have to depend on import, and that has been also greatly facilitated by provisioning appropriate budget to the scheme. The evidences suggest that if we actually have appropriate management practices in place, we can go up to harvesting up to 10 tons per hectare. Average 5 to 6 tons per hectare we can harvest. And if we have 2 million hectares of land, and Telangana itself talks about 1 million hectare in few years' time. If you have 2 million hectares and if we have 10 tons yield or even 5 tons yield, so obviously 10 million tons we can harvest, 10 million tons of oil we can harvest. No other oil crop, oilseed crop can give so much of return. So that's the kind of potential and that's the kind of advantage this particular crop can provide to this country, and we can go for import substitution in a very phased manner, in a very strategic manner, in a very planned manner. Integrated farming systems which have been actually standardized by our OilPalm Research Institute, which is not very far from here, and which has been working for more than 20 years. It says that the return can increase and the BCA ratio could be 1 is to 1.3, 1.35 in fact. And similarly, intercrops can give huge returns, and that is the kind of technology which are all standardized, and they are all part of the scheme. And I believe those all the stakeholders, the industry, the farmers, and everybody will take note of that and will implement those with all sincerity. And there lies the key of our success. And similarly, the fertigation process. In fact, we can save 25% of our irrigation, and in fact 30% of our fertilizer, and also have 25-30% yield increase by way of that. So I believe that if we can have right use of technology and integrate that with this beautiful policy intervention which the central government has brought in and provided this scheme, so we will be able to really reach there where we want to really go. And in fact, if we can actually incorporate the crop waste to the tune of 15 tons per hectare per year, we will be able to save 50% of inorganic fertilizers. In fact, that's a big plus. Honorable Prime Minister advises to save on chemical fertilizer, save on chemical fertilizer, and 25-30%. In this case, we can save to the tune of 50%. So I believe that we should be able to really go for large-scale adoption of the validated technology, which are now with enough scientific evidences, and so that we harvest the full benefit out of this scheme. And I am sure the industry, the state representatives and the farmers who are attending, they will take note of this and come forward. And we are here from the Indian Council of Agriculture Research, to our institutions, and particularly Indian Institute of OilPalm Research. We are here to provide all the technology backstopping, whatever is required by the farmers, anytime, even industry, and also provide all support for training, capacity building, and holding, so that we succeed and so that we go for import substitution as it is directed by Honorable Prime Minister. Thank you very much. I hope we will work together to succeed and succeed, only succeed in time to come. Thank you very much. పెట్టావా
Thank you very much, sir, for your valuable scientific insights on oil palm farming. Before we listen to our other esteemed dignitaries on the dais, we have a very important event that's going to take place now, which is the distribution of registration certificates of FPOs. The FPOs for oil palm have fully been funded by the Government of India and are responsible for adding value addition to oil palm and increasing the income of farmers. And before we have the distribution of registration certificate of FPOs, I now invite Shri Somesh Kumarji, Chief Secretary, Government of Telangana, to please give his address. hello. माननीय मंत्री, कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय राज्य मंत्री कृषि और फार्मर वेलफेयर श्री कैलाश चौधरी जी, तेलंगाना के माननीय मंत्री एग्रीकल्चर श्री सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर फ्रॉम केरला श्री पी प्रसाद जी, तेलंगाना रैतु बंधु समिति चेयरमैन डॉक्टर पल्ले राजेश्वर रेड्डी जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री संजय अग्रवाल जी, डायरेक्टर जनरल ICAR डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमती सुभा ठाकुर जी, तेलंगाना के APC रघुनंदन जी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर वेंकटराम रेड्डी, स्पेशल CS फाइनेंस रामकृष्णा राव, VC Agriculture University of Telangana Dr. Praveen Rao, all the dignitaries, all the participants, particularly farmers, media, it is my proud privilege to welcome you all to this conference. I am deeply indebted to Government of India and particularly Honorable Minister Sri Narendra Singh Tomar ji and Secretary Sanjay Agrawal ji for selecting Hyderabad as the venue for this important conference. Sir, I would like to tell you that this is the most appropriate time to have this meeting. The entire country and world is struggling with various issues related to cropping patterns and alternate crops. And this is, I can assure you, sir, this is very timely. Before I go into other details, sir, I would like to thank all of you for bringing such a revolutionary scheme on oilseeds and particularly oil palm. The speed at which the Honorable Minister and Secretary has been working it around these issues is amazing. The Honorable Minister had come for a program and I had the opportunity to meet him in Rajendra Nagar and the Secretary was also there. We had taken the decision on oil palm in the cabinet and we were struggling with various issues. One of the issues was regarding the basic custom duty. Because of, technicalities, the sprout, which is so essential for this entire program, which comes from few countries in the world like Indonesia, Costa Rica, those kind of Malaysia, and some little bit from Bangkok or Thailand. The excise duty was put at 30%. So I found it because it has changed and it was very difficult to get sprouts. So I requested the Honorable Minister, he directed the Secretary, Mr. Sanjay Agrawal,
And to my utter surprise, I thought we tell many things, nothing happens or it takes a lot of time. But I remember the date also, sir. On 4th of October, we got the letter. Within less than, I would like you to clap because, all of you are sitting as if nothing is happening. So, on 4th of October, I got the letter saying that 30% has been reduced to 5%. It was a great development, sir. And really, I am very happy to tell you that only in Telangana, because of this one thing, and within this short period, our companies who are working on this saved nothing less than 260 crores, sir. So you can understand, one decision of yours can make such a big thing. Even other difficulty was that the companies were losing lot of money. They were not getting enough money for this sprout. So they were little hesitant. You raise the value of a sprout and therefore it became very easy for them. Now actually they are break even or they are also saving some money. So the motivation to go for a sprout is very, very important, sir. Under the dynamic leadership of our Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, the government of Telangana has taken various measures to encourage this, sir. And I am sure with your cooperation we can do much more. Just to give few statistics, sir. India consumes 20% of the global palm oil imports, sir. But it only produces 0.33% of the palm oil globally. This is the kind of gap. We almost, if my memory goes right, we import 1 lakh crores of palm oil to India. And this is a real step towards Atmanirbhar. Telangana Atmanirbhar Bharat, sir. So far as Telangana is concerned, sir, it consumes 3.6% of the palm oil. But it produces 18%. And very soon, we will be doing much more. Sir, Telangana ranks number 1 in terms of oil extraction rate of 19.22 in palm oil. Though it is 6th in terms of area under cultivation, but 2nd in terms of the FB production owing to better yields of plantation. Now in Telangana, sir, 437 mandals in 26 districts, we have allotted to 11 companies to take up this thing. We have ordered for seedlings 3.25 crore seedling. This is the most important constraints are now, and I request the Honorable Minister Sahab and the Secretary that you need to do something on the importing of these sprouts, sir. We have already received 54 lakh sprouts, sir, which will be enough to do about 80,000 acres. This scheme is wonderful, sir, and we can do much more under this. Telangana has already got the approval from the cabinet under the guidance of our Minister, Sri Singireddy ji, for 20 lakh acres, sir. We want to do 20 lakh acres in 3 years. One of the areas in which we requested your help is that if the drip irrigation is the most critical component in this program, sir. After a sprout, it is drip, because that is the real reason for growth of this crop. The subsidy is only to 27,304. Maybe you can think of increasing it, sir. One area, because of your resources and contacts, sir, if you can impanel agency across the world for supplying of sprouts, it will bring lot of uniformity. Now, everybody keeps on going to them. So, impanelment is important, sir. A team can be there, they can go, they can see the farms and certify. Then it will help us a lot. Other one is, sir, there is a lot of, EXIM permits. Lot of windows are there. If we can get an EXIM, single window EXIM clearance, it will be very, very useful. Here, sir, large number of people who are going to set up oil palm extraction plants are here. One of the things is, sir, in collaboration with the industries department and all, if we can provide capital subsidy, it will speed up the whole process of setting up these. They are not very expensive things, but some kind of incentive is going to make it happen very fast.
It is also important, sir, that under your leadership, that we go for a national capacity building program. It will be good if we can take some of the farmers, some of these companies, some of the officials to various countries. It is going to make a very big benefit. I really wonder, sir, why an idea like oil palm took so much time to convert into such a scheme. It is so easy if we really start focusing on it. Today, sir, maybe in 3 to 4 years, Telangana is going to become the third largest crude palm oil producing country after Indonesia. Telangana itself, after Indonesia and Malaysia, it is going to be Telangana, sir. So it needs your blessings, it needs your support. Other reason is, sir, the farmer's income increases by 4 to 5 times. To me, each tree looks like a bank account. Every month, every acre provides as today rate 10,000 rupees to the farmers. And there is no pest attack, there is no wild boar, there is no monkey, nothing. So this is the beauty of this scheme. In addition to the increase in income, sir, it also leads to 2.3 lakh people getting direct employment, indirect employment, which is a big number. There is going to be in Telangana 10% enhancement in states agriculture GVA, sir. And when we start producing, it is going to add rupees 2,000 crore annually in SGST, sir, in the GST. In terms of imports, sir, we will be able to save $2.5 billion. It is also very environment friendly. We'll be saving 38 billion kiloliters of irrigation water. And one direct benefit is that we will be saving 1,137 crores of power because it needs only 25% of the power for drip irrigation. In addition, it also is going to bring carbon credit, if we can work out a scheme, sir, worth $200 million US. So it is a great scheme, sir, and we are really grateful for you having come here, encouraging our farmers, encouraging our industrialists. Many industrialists are today, I should tell you, who are in seed industry and others, have started showing lot of interest for this project. And without your support, and it would not have been possible. I would like to thank you for coming here. I would like to again welcome you to the pleasant Telangana, free from pollution and free from the cold which you might be suffering elsewhere. So again, I welcome you. I thank the organizers for doing such a wonderful thing, and particularly Mr. Subra, Mr. Raghunandan, Mr. Venkatram Reddy, Sarojini. All these people have worked hard to make this event a great success, and I am very confident, sir. Under your guidance, this scheme will take off. Thank you very much, sir. Thank you, Somesh Kumar sir, for those inspiring words and for sharing the story of Telangana oil palm farming and the vision of the state, which is indeed really encouraging. We'll now have the very important event that we just mentioned a little while ago, distribution of registration certificate of FPOs. The FPOs for oil palm have been fully funded by the Government of India and are responsible for adding value addition to oil palm and increasing the income of the farmers. I now request our Honorable Minister, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Agriculture Minister, to distribute the registration certificate of FPOs, which is a very big step forward in the promotion of this crop. आदरणीय मंत्री जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप FPOs को registration certificates प्रदान करें. Let's have the first registration certificate, please. Mookamamidi Palm Oil Fed Producer Company Limited. The first FPO certificate to Mookamamidi Palm Oil Fed Producer Company Limited.
Request the next FPO to please be ready. Ankapalam Palm Oil Fed Producer Company Limited. Ankapalam Palm Oil Fed Producer Company Limited. The FPO registration certificates are now being presented to the FPOs. Dammapeta Palm Oil Fed Producer Company Limited, request you to please come onto the stage. తర్వాతి వారు అశ్వరావుపేట్ పామ్ ఆయిల్ ఫెడ్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ వారు కూడా వేదిక మీదకి రావాలి. అశ్వరావుపేట్ పామ్ ఆయిల్ ఫెడ్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ప్లీజ్ be on the stage. తర్వాతి వారు వెంకటాద్రి పామ్ ఆయిల్ ఫెడ్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వారు కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Dignitaries Palm Oil Fed Producer Company Limited. Dignitaries Palm Oil Fed Producer Company Limited. Anantaram Godavari Palm Oil Fed Producer Company Limited varu vedik medaku ravali. The FPOs are being monitored and controlled by the NAFED, as we all know. Godavari Palm Oil Fed Producer Company Limited. Tarvati varu Lakshmi Ganapati Palm Oil Fed Producer Company Limited. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause. This is indeed a revolutionary step forward. Nandagopala Palm Oil Fed Producer Company Limited. Venkateshwar Palm Oil Fed Producer Company Limited. Venkateshwara Palm Oil Fed Producer Company Limited. A big round of applause for all the FPOs today. Thank you very much, sir. Request all our dignitaries to please be seated. I now invite Shri P. Prasad Ji, Honorable Agriculture Minister for Kerala, to give his address. Honorable Minister for Agriculture, Government of India, Sri Narendra Singh Tomar Ji. Honorable Minister for State, Sri Kailas Chaudhary Ji. Honorable Agriculture Minister, Government of Telangana, Sri S. Niranjan Reddy Ji. Telangana Raitu Bandhu Samadi Chairman, Dr. Palla Rajeshwar Reddy Ji. Department of Agriculture Secretary, Government of India, Sri Sanjay Agarwal Ji. Director General of ICAR, Dr. Trilochan Mahapatra Ji. Chief Secretary, Government of Telangana, Sri Somesh Kumar Ji. Joint Secretary, Government of India, Srimati Shubha Thakur Ji. Other senior officials, dignitaries and participants. It is a pleasure to be a part of this business summit on oil palm. Oil palm, which is a native of West Africa, has now become one of the largest sources of vegetable oil in the world, as well as of India. It has achieved this stance because of its high productivity and consumer acceptance.
The share of palm oil among the vegetable oils consumed in India has increased steadily from 29.1% in the year of 2001-2002 to 42.1% in the year of 2018-19. Out of the total vegetable oil imported into the country, the share of palm oil is around 65%. At Kerala, plantation of oil palm was started in the year 1971 by the Plantation Corporation of Kerala Limited, the parent company of OilPalm India Limited at the time. Now OilPalm India Limited, which is jointly promoted by Government of India and Government of Kerala, independently carry out the mandates for promoting oil palm cultivation and acts as a nodal agency in the state of Kerala. The initial challenges of developing oil palm in the country, including the issue of pollination, were addressed by the continued efforts of the administrators of OilPalm India Limited. Many of the plantation managers in India may not be aware that the initial pollination of oil palm in the country was done manually. Later, by the steadfast efforts of OilPalm India Limited, pollinating weevils were introduced, making it possible for raising up large-scale plantations all over India. In Kerala, we are currently having 7,000 hectares of oil palm cultivation. Kerala is having the oldest seed garden at Todupuzha in Kerala under OilPalm India Limited. Sprouts produced there, known as Vetimetum sprouts, is renowned among the oil palm cultivators all over India. Currently, seed garden at Todupuzha is having the single largest nursery with a potential capacity to produce 11 lakh sprouts per year. Considering the rising demand in the country, we are planning to increase the production here to 1.5 million sprouts per year and also to start another seed garden at Kolathupuzha in Kollam at a cost of 2 crores. We look forward assistance from central government in this regard. The modern palm oil mill established at Yerur in Kollam is a state-of-the-art processing facility for fresh fruit bunches produced in the state. The mill can process 20 tons of FFB per hour and the crude palm oil is supplied to various agro-industries in the country. There is also a production facility for palm kernel oil which produces around 800 tons of palm kernel oil. Presently, we are in short of FFB supply to quench the full capacity of the mill. We look forward to other states to obtain sufficient FFB to the plant. We also propose to increase the capacity of the plant so that FFBs across the nation would be brought to the plant for processing. Indian Institute of Oil Palm Research at Palod, Thiruvananthapuram is the oldest research institute for oil palm in the country. The institute has a seed garden with a capacity of 1 million sprouts and supplies high quality Tanara sprouts from its seed garden to the farmers of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and the Northeast. We expect that the institute also will be a partner in our endeavors. We look forward to more collaborative programs with Government of India and various states for imparting training to workers and by sharing the various agricultural practices that were preferred in our plantations from our collective experience of the last 4 decades. Thank you all for your patience and participation in these distinct times. Thank you. Thank you very much, sir. Nandri, sir. Nanni. I now invite Shri S. Niranjan Reddy ji, Honorable Agricultural Minister of Telangana, to give his address. Honorable Union Minister, respected Sri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Union Minister MOS Sri Kailash Chaudhary ji, Honorable Minister for Agriculture, Government of Kerala, Sri Prasad ji, respected Secretary, Government of India Agriculture, Sri Sanjay Kumar Agarwal ji, Dr. Palla Rajeshwar Reddy, the Chairman, Telangana State Raitu Bandhu Samiti, Madam Shobha Thakur ji, Joint Secretary, Government of India, Sri
Mahapatra ji, Dr. Mahapatra ji, Director ICAR, our Chief Secretary Sri Somesh Kumar ji, our Special Chief Secretary Sri Ramakrishna Rao garu, our Secretary and APC Sri Raghunandan Rao garu, Honorable MLAs who are present here, Sri Manohar Reddy garu, Sri Gandra Venkatramana Reddy garu, Government Whip and MLA Sri Balkasuman garu, Sri Surendra MLA garu, former Special CS Sri Nagireddy garu, our Vice Chancellors Dr. Pavin Rao garu, Dr. Nirja Prasad garu, dignitaries present in the summit, friends from media, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. It's our pleasure and we are privileged that the National Summit is being organized and the state of Telangana is hosting it here in the beautiful city and most happening city, that's Hyderabad. We are thankful to Government of India for having taken a decision to organize this summit here in Hyderabad. As you all know, our state, the Telangana, that has been carved out from the composite state of Andhra Pradesh on 2nd June of 2014, being 29th state at that time, and now it is 28th state. It has got a geographical area of almost 1.12 lakh square kilometers. सब हमने हमारे चीफ मिनिस्टर जी, हमारे मंत्रीगण और हमारे अधिकारीगण पिछले 2-3 महीनों में दिल्ली जाना पड़ा। भारत सरकार की ओर से मंत्री जी, पीयूष जी, प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर और ऑफिशियल्स को मिलना पड़ा, मिलते रहे। उन लोगों ने कन्वर्सेशन में ये बात की, अरे भाई आप क्या जादू की कि इतने फसल आ गए आपके पास कि हम नहीं ले सक रहे आज हिंदुस्तान में। तो हम बोले साहब जादू नहीं की, हमारे केसीआर साहब एक नए तरीके से, एक नया विजन से जो है सो मेहनत की, 7 साल की मेहनत की जो है सो वो आज ये पैदावार है। तो कहीं कोई लड़का अच्छा पढ़ता है, कोई आदमी अच्छा काम करता है, कोई किसान अच्छा पैदावार करता है, कोई साइंटिस्ट अच्छा इनोवेट करता है, डिस्कवर करता है, और कोई लीडर अच्छी राजनीति से आवाम को ज्यादा फायदा करता है, कोई अच्छा सोशल वर्क करता है। हर किसी को हम एंकरेज करते हैं, शाबाश बेटा और आगे चलो। जब तेलंगाना पंजाब से भी ज्यादा पैदावार की तो तेलंगाना को सपोर्ट करना है भारत सरकार की ओर से। कैलाश जी मेरे बाजू में इससे पहले बोल रहे थे, अरे भाई आप कैसा जादू की, क्या जादू की, इतना पैदावार आ रहा आपके पास। तो आप तमाम लोग भारत सरकार की ओर से हमको दुआएं देना चाहिए, यहाँ के फार्मर्स को दुआएं देना चाहिए। आप ही की कहावत थी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, नीड ऑफ द आवर। उसको जहन में रख के ही भारत सरकार बोलने से और पूछने से पहले से ही यहाँ पे तेलंगाना सरकार ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के वास्ते हमने बहुत ही स्कीम्स इंट्रोड्यूस की, आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जुड़ाते हुए और हम अलग करते हुए फार्मर्स को मोटिवेट करते आ रहे हैं कि नीड ऑफ द आवर क्या है, कंटेम्पररी पीरियड में हिंदुस्तान में क्या हालात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या हालात है, कि हालात को जुड़ाने के वास्ते हम कैसे क्रॉप्स कल्टीवेट करें। इसका काम चल रहा ऑलरेडी। तो शुरू में ये मैं आपको बताना मुनासिब समझ रहा था, इसलिए मैं आपको हिंदी में 2-4 बात बताने के लिए कोशिश की। आपकी उतनी फंसी हिंदी नहीं, हमारी तो जबान उर्दू से मिलके यहाँ की हैदराबाद उर्दू, हैदराबाद हिंदी। Thank you, sir. So, the visionary steps and the innovative decisions and the initiatives that the Honorable Chief Minister of Telangana, Sri KCR, had taken, like initiatives like 24 hours free and quality power supply to the farmers. और इसके बाद the one and only unique scheme in the entire world, nowhere in the world, it's called Raitu Bandhu,
giving 10,000 rupees per acre to all the farmers, to the entire cultivable area of agriculture, which has now amounted to, including this season, our Special Chief Secretary Ramakrishna Rao Garu has given me just now the figure that farmers of Telangana have been given during the last 7 seasons an amount of rupees 50,000 crores 675.63 lakhs. 50,000 crores of rupees have been pumped into the accounts of the farmers of the state, which has directly helped them in bringing out huge produces in the agriculture. The irrigation facility and the extension systems have enormously triggered for the growth of agriculture in the state of Telangana over the last 7 years. Since the formation of the state of Telangana, it has gone up, the cultivable area has gone up from 42% to now it's almost, that was 122 lakh acres hitherto, now it is 2 crores 3 lakh acres now. So that is the progressive increase in the cultivable area of the state. This has resulted into the production that has gone up from 68 lakh metric tons that was registered in 2014 and 15, and now it is 259.2 lakhs, 2 crores 59 lakh metric tons in 2021. Similarly, the increase in horticulture area could be seen. There is an increase of almost 23% in the horticultural area increase. We have increase in mango, we have increase in red chilli, turmeric, vegetables and other major crops. The enhanced irrigation facility has resulted in increase of our paddy enormously. And we have surpassed the paddy production of Punjab, which has recorded almost 5 to 6 decades first in the country. Now we have surpassed Punjab, sir. That is where we need appreciation of Government of India. We are not expected to have a cursing view on the farmers of the state of Telangana. So we should have appreciation. You may always ask us to go for diversification and we are ready. We are ready. Therefore, having felt the need for crop diversification, we are now educating the farmers, driving the farmers to go for oil seeds, pulses, vegetables, fruits and so on. As it was enumerated, it was illustrated by our Chief Secretary Somesh Kumar ji, it was also shown in the documentation that the technical committee, high-level committee that was constituted by Government of India, it has visited Telangana in a span of 1 year twice, and it has recommended saying that as on the date of their visit, they concluded that 25 districts out of 33 are most suitable for cultivating oil palm in the state of Telangana. And after their recommendation, 3-4 districts have also added because of the vegetation, because of the irrigation potential that has been spreading. So except Hyderabad metropolitan city, I don't think there will be any area that will be remaining which is not suitable for cultivation of oil palm in the state of Telangana. That is the beautiful ecosystem that is most favorable for cultivating oil palm in the state of Telangana. So, in the light of these aspects, there are certain issues which we would like to request Government of India to take into cognizance. So, considering the potentiality in Telangana for oil palm with increased irrigation facility and owing to its importance under crop diversification from paddy, maize, etc., state government has laid thrust on oil palm area expansion. With the continuous and diligent efforts of the state government, Government of India notified an additional potential area of 4.36 lakh hectares, which is equivalent to 10.90 acres, 90 lakh acres. 5 years action plan under NMEUP. The Government of India has launched a new centrally sponsored scheme
namely National Mission on Edible Oil, Palm, Oils and Oil Palm from 21-22 to 25-26 with a total outlay of rupees 11,040 crores and out of which Government of India's share is 8,844 crores. The mission aims at covering an additional 6.5 lakh hectares under oil palm in the country by the 25-26. Whereas the Telangana government intends to cover an area of 12 lakh hectares, that is 30 lakh acres, as it was said by our Chief Secretary just before, under oil palm from 21-22 to 25-26 with an outlay of rupees 13,968 crores in a mission mode in view of the huge potential. जितना आप टारगेट दिए उससे ज्यादा करने के लिए हम तैयार हैं. Area is suitable. We are intending to take out. Therefore, in view of tremendous potential for oil palm cultivation in the state, it is requested that the following issues be taken into consideration. That is number one, approval of action plan to cover 30 lakh acres. Secondly, provision of an amount of rupees 7,170 crores towards central share for the above area. Revision of indicative cost and norms under micro irrigation for oil palm. Considering the actual field requirement and increase in raw material cost in the recent past, the unit cost of micro irrigation components for oil palm crop is being enhanced to 53,465 per hectare, which is resulting in additional burden on the state government. Hence, it is requested to enhance the indicative cost on installation of drip irrigation from rupees 27,304 per hectare to 50,000 to 55,000 per hectare for oil palm crop under PMKSY. Similarly, we request for extending micro irrigation assistance for the entire plantation area taken up by the farmer, as there is no such restriction on extending cultivation assistance for plantations. Relaxation of 7 years locking period for availing micro irrigation assistance for oil palm farmers exclusively. Considering micro irrigation component of oil palm under NMEO as a special case instead of under PMKSY PDMC. Enhancing assistance on inputs and intercrop. While welcoming the decision of Government of India in enhancing the assistance on plant material, it is also requested to enhance the assistance on inputs and intercrops from the existing 50 to 5,250 per hectare per year, keeping in view the cost of fertilizers and PP chemicals. Minimum guarantee price. This is very important, sir. The farmers of Telangana opine that the viability gap payment is not in their favor. Hence, there is a need for provision of minimum guarantee price of rupees 15,000 per metric ton for oil palm fresh fruit bunches. Assistance on border plantation also is requested. The farmer can raise an additional income through border crops like sandalwood, bamboo, teak, etc. Hence, border crops should be encouraged for oil palm plantations under MMEOP so as to make it full-fledged mission. So these components and elements may kindly be taken into consideration while examining the subject, and we assure you that, sir, Telangana will be the first state in achieving the target that is posed by Government of India, and we will not be inferior to anyone. We will be far, far superior to many states in the country because of our pro-farmer policies that are being taken up and adapted in the state, and also the ecological and irrigation potential that is favorable to the crops. Therefore, you may kindly take into consideration all these aspects and encourage the state of Telangana in a wide crop diversification, which will not only help the state of Telangana and its farmers and its economy, it will also add to the national economy. Thank you. Jai Bharat, Jai Telangana. Thank you very much, sir, for that comprehensive
set of remarks and the requests from the state to the center. And also, thank you for explaining the important initiatives on oil palm taking place in the state. We are confident that oil palm plantation will be a successful endeavor in the state. Thank you very much, sir. I now invite Shri Kailash Chaudhary ji, Honorable Union Minister of State for Agriculture, for his address. आज के इस महत्वपूर्ण इस सम्मेलन में हमारे मध्य उपस्थित भारत सरकार में हमारे कृषि मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और हमारे मध्य उपस्थित हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी, तेलंगाना के श्री रेड्डी जी और हमारे मध्य उपस्थित केरल के कृषि मंत्री श्री पी प्रसाद जी और भारत सरकार में एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी संजय जी अग्रवाल और आईसीआर के डीजी महापात्रा जी, हमारे मध्य ही उपस्थित यहाँ के किसान नेता पल्ला राजेश्वर रेड्डी जी और हमारे मध्य उपस्थित हमारे एग्रीकल्चर के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती सुभा ठाकुर जी और सेक्रेटरी हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी यहाँ पर उपस्थित चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सरकार और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विधायकगण, एमएलएज और सभी हमारे यहाँ के वीसीगण, सभी स्टेट सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारीगण और सभी यहाँ पर आए हुए किसान भाइयों और बहनों और मीडिया के बंधुओं, जैसा कि आज का यह दिन निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज एक जो मिशन प्रारंभ किया गया और उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये आज की बैठक और ये सम्मेलन निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर किसान की इनकम बढ़ाने के लिए और एक जो महत्वपूर्ण हमारे देश की समस्या है उसका समाधान करने की दृष्टि से कि जो हमें ऑयल है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका समाधान कैसे हो, इस दिशा के ऊपर निश्चित रूप से ये आज का सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि हम जानते हैं आज देश के अंदर ऑयल को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। एक समय था जिस समय देश के अंदर किसानों को कोई भी उत्पादन बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं होती थी, खेत के अंदर ही उसका हर वस्तु उसको मिल जाया करती थी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद में हमारे यहाँ पर खाद्यान्न की दृष्टि से भी आज हमारा देश है वो सरप्लस हुआ है। खाद्यान्न में तो निश्चित रूप से हम सरप्लस हुए, किसानों की मेहनत और उसकी वजह से आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर ऑयल की दृष्टि से देखा जाए तो हमें विश्व के अंदर जितना ऑयल उत्पादन होता है और उसमें हमें आज यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर लगभग देश की जो हमारी 80,000 करोड़ से भी अधिक यहाँ पर इंपोर्ट होता है। और इसके बाद मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जहां 25 मिलियन टन देश का पूरा कंजप्शन है और उसमें से अपने को मात्र यहाँ देश के अंदर घरेलू जो हमारा उत्पादन है लगभग 12 मिलियन टन है। बाकी का जो उत्पादन है वो हमें दूसरे देशों के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है और हमें दूसरे देशों से लाना पड़ता है।
तो इस सारी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और हमारे कृषि मंत्री माननीय तोमर साहब के नेतृत्व के अंदर एक महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया गया कि हमें हमारे देश को ऑयल के अंदर आत्मनिर्भर बनाना है। तो उसके लिए एक योजना बने और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया और लगभग 11,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट का प्रावधान अलग से किया गया है और जिससे कि किसानों को और सरकार को सपोर्ट करके और आगे इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। और ये कार्य तभी संभव हो सकता है जब राज्य सरकारों का सपोर्ट मिले और राज्य सरकार उसमें सहयोग करे। और निश्चित रूप से राज्य सरकारों के सहयोग से इसमें लगभग 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार का सपोर्ट रहेगा और वहीं पर भारत सरकार की ओर से 8,844 करोड़ रुपए का राज्य सरकारों को सपोर्ट के माध्यम से इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। कोई भी अगर काम हो, कोई भी मिशन हो, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और विशेषकर एग्रीकल्चर के अंदर साइंटिस्ट का रिसर्च और किसान की मेहनत और सरकार का सपोर्ट, ये तीन जब चीज मिल जाती है तो मुझे लगता है कि वो ऐसा कोई काम असंभव नहीं है जो मिशन पूरा नहीं हो सके। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज जैसा कि पूर्व के अंदर सभी वक्ताओं ने बताया और यहाँ के मिनिस्टर साहब ने भी अपने अचीवमेंट बताए, और मुझे जहां तक दिखता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है एग्रीकल्चर के अंदर, एक समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति दूर भागना चाह रहा था, लेकिन आज एग्रीकल्चर के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और उसके लिए राज्य सरकारें प्रयास करिए, भारत सरकार से भी सपोर्ट दिया जा रहा है। और जहां तक मैं देख रहा हूं और मुझे याद है अच्छी तरह से, ये मिशन जब हाथ में लिया था तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये बात जब कही कि देश के अंदर किसान ऑयल पाम के अंदर हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और उस समय जहां पूरा देश उस समय लॉकडाउन के अंदर था और उस समय कृषि मंत्रालय के अंदर बैठकर तोमर साहब के नेतृत्व में लगातार इस बात की चिंता की जा रही थी कि किसानों की इनकम बढ़ानी है और हमारे ऑयल पाम मिशन को किस तरह से आगे बढ़ाना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना के संकट के अंदर भी जहां पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए, कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कोरोना के बीच में भी, चाहे उसके लिए खरीद करने का विषय था तो वो खरीद की समय पर खरीद हुई, और जहां छूट देने की आवश्यकता थी, कोई भी अगर कोई मशीनरीज को ले जाना लाना हो तो, और साथ ही उसके साथ ही जहां पर इनाम मंडी के माध्यम से मार्केट के अंदर किसानों की खरीद सही समय पर बेचान हो जाए, इस दृष्टि से मंडियों को भी जोड़ा गया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस दौरान किसान रेल का भी शुभारंभ हुआ और किसान रेल के माध्यम से कि किसानों को इसका लाभ मिले, किसान को उसकी ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो कम उसके ऊपर वहन करना पड़े, और इस दृष्टि से निश्चित रूप से काम किया गया। और इसी बीच में ये मिशन के तौर पर भी प्रारंभ किया, और आज मुझे जो लक्ष्य लिया गया है वो लक्ष्य निश्चित रूप से चाहे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो, चाहे हमारे ये राज्य अभी जो तय किए गए हैं दूसरे राज्य, उनके अंदर अब भारत का आज लगभग आधे प्रदेशों के अंदर इस मिशन को जिस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि इसके लिए भारत सरकार की ओर से जितना भी सपोर्ट होगा वो निश्चित रूप से राज्य और सरकार किसानों को इस के लिए अवेलेबल किया जाएगा। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कहते हुए कि सरकार के द्वारा सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे अगर हमारे सीड गार्डन बनाने हो तो उसके लिए भी 80 लाख रुपए एक गार्डन के लिए, उसकी भी सरकार की तरफ से सपोर्ट है। अगर कोई नर्सरी स्थापित करना चाहता है, अगर उसके लिए भी 40 लाख रुपए 10 हेक्टेयर तक के लिए, और इसी के साथ में कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी 25 लाख रुपए तक का सपोर्ट देने का प्रावधान किया गया है।
किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए भी भारत सरकार की ओर से 30,000 रुपए, एक 30 किसानों तक को ट्रेनिंग देने के लिए, और साथ ही अधिकारियों को भी ट्रेनिंग कर देने के लिए 40,000 रुपए 20 अधिकारियों तक को ट्रेनिंग देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। वहीं पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्लांटिंग मटेरियल का जो है उसमें अगर विदेश सपोर्ट है तो उसके तौर पर भी 29,000 रुपए के तौर पर उनको किसान को सपोर्ट देने का भी प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर यह है कि आने वाले समय के अंदर ये जो हमारा मिशन है, जहां भारत सरकार की ओर से लगातार हर क्षेत्र में एक ही उद्देश्य है कि किसान की इनकम बढ़े, और किसान को लिए महत्वपूर्ण 3-4 चीजें होती है। किसान को अपनी एक तो बढ़िया किस्म का बीज मिले या उसको प्लांटिंग मटेरियल मिले, तो इस दिशा के अंदर सरकार काम कर रही है। और किसानों के लिए भंडारण की व्यवस्था हो, और किसान को की लागत कम कैसे हो और मार्केट कैसे मिले, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज देखा जाए तो अभी एफपीओ का यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया, और देश के अंदर आने वाले समय के अंदर 10,000 एफपीओ भी बनाए जाएंगे, और 10,000 एफपीओ बनकर किसानों को जिस तरह से एक सपोर्ट के तौर पर भारत सरकार की तरफ से उनको सहयोग भी किया जा रहा है। और इसी के साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि ताकि किसान अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके, और जो हमारी यूनिट्स है जिस तरह से उसको किस तरह से सपोर्ट मिले, और इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये योजना जब बनी और योजना बनाई गई तो इसका पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे जो देश के किसान हैं या आम नागरिक की जो खाद्य सुरक्षा के तौर पर हम आज खाद्यान्न के अंदर हम आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन तिलहन के अंदर भी हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े, और इस दृष्टि से ये कार्य प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से आपके सहयोग से और राज्य सरकारों के सपोर्ट से और किसानों की मेहनत के और परिणाम स्वरूप वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन हमारा जो लक्ष्य लो हमने लिया है वह लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। और राज्य सरकारों से जैसा अभी उन्होंने कहा मंत्री जी ने कि सपोर्ट की बात है, तो राज्य सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ेगी तो भारत सरकार 10 कदम आगे बढ़कर आपके सपोर्ट के अंदर साथ खड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य एक ही है कि किसानों की इनकम बढ़ाना और देश के किसान को आत्मनिर्भर करना। तो इस दृष्टि से ये आज की समिट है वह निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारे किसानों को भी लाभ देगी। हमारे देश की बजट जो जीडीपी के अंदर जो योगदान है उसमें भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि पहले जब आप और हम सब जानते हैं कि कृषि की जीडीपी के अंदर कृषि का देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन धीरे धीरे कम हुआ। लेकिन अब आने वाले जिस तरह से आप और सबका मन और मस्तिष्क और जिस तरह से मेहनत है और जिस तरह से एक विजन लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम इस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे और देश के जो आत्मनिर्भर बनाना है उस आत्मनिर्भर में भी हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इतना ही मुझे कहना था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your valuable remarks and highlighting the efforts of the Government of India for increasing the oil palm plantation. And now, ladies and gentlemen, I now invite Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Union Agriculture Minister, to give his inaugural address. आज के इस गरिमामयी सम्मेलन में हम सब के मध्य उपस्थित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार तेलंगाना के हमारे कृषि मंत्री माननीय श्री रेड्डी जी, केरला सरकार के मंत्री माननीय श्री पी प्रसाद जी, डॉक्टर पाला राजेश्वर रेड्डी जी,
भारत सरकार के कृषि सचिव आदरणीय संजय अग्रवाल जी, सचिव डेयर और महानिदेशक आईसीएआर डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय सोमेश कुमार जी, भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती सुभा ठाकुर जी, तेलंगाना सरकार के प्रमुख सचिव श्रीमान रघुनंदन जी, कुलपति श्री प्रवीण राव जी, AK सिंह जी, कमिश्नर हॉर्टिकल्चर, और इस अवसर पर उपस्थित सभी कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वज्जन, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमी, किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज ऑयल पाम मिशन की दृष्टि से भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के बाद यह दूसरा सम्मेलन है। मैं इस सम्मेलन में आप सबका भारत सरकार की ओर से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप सबका इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के इस कार्यक्रम को राज्य सरकार और उनकी पूरी टीम ने मिलकर बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से जो निष्कर्ष आएंगे वो ऑयल पाम मिशन को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होंगे। इसके लिए मैं सोमेश कुमार जी की टीम और सुभा ठाकुर जी की टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सभी भारत में रहने वाले लोग हैं। भारत की दो प्रधानताएं हैं। एक भारत कृषि प्रधान है और दूसरा भारत धर्म प्रधान है। धर्म की प्रधानता से मेरा आशय पूजा पद्धति से नहीं है। हर इंसान का देश के प्रति धर्म है, संस्था के प्रति धर्म है, अपने संबंधियों के प्रति धर्म है, जो सरकार में काम करते हैं उनका सरकार के प्रति धर्म है, जो जनता में काम करते हैं उनका जनता के प्रति धर्म है। ये जो धर्म की प्रधानता भारत में है, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत के रहते कई बार विदेशी आक्रांताओं ने भी हम लोगों को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत की विभिन्नता में एकता के इस ताने बाने को कोई भी तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। इसी प्रकार से कृषि की भी प्रधानता है। जब जब देश में आर्थिक प्रतिकूलता आई तो कृषि और गांव
इन दो की जो हमारी पारंपरिक अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था ने पूरी ताकत के साथ मुकाबला किया और देश को कमजोर नहीं होने दिया। हाल ही में कोविड के कालखंड के समय भी दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देश और उनकी अर्थव्यवस्थाएं थम गई थी। भारत भी उससे प्रभावित था। हमारे भी कल कारखाने के पहिए बंद हो गए थे, लेकिन हम यह गौरव के साथ कह सकते हैं कि कृषि का पहिया चलता रहा, किसान परिश्रम करता रहा, सरकार मदद करती रही और कोविड के इस दौर में भी देश के किसानों ने बम्पर पैदावार की, सरकार ने बम्पर खरीद की। और मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोविड की प्रतिकूलता में एक बार फिर कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। तो कृषि की ये प्रधानता जो है, ये हमारा मेरुदंड है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में बैकबोन का महत्व होता है, ऐसे ही भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। और इस ताकत को हम जितना फलीभूत करेंगे, जितना बढ़ाएंगे, उतनी ही मजबूती के साथ विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर भारत ताकत से खड़े होने में कामयाबी हासिल कर सकेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज कृषि के क्षेत्र में काफी जागरूकता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब यह कहा कि कृषक की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तब से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसान हो, किसानों से संबंधित अनेक संगठन हो, सबके जबान पर एक ही चीज है, आमदनी दोगुनी कैसे हो। आज खेती उन्नत बने, खेती हमारे लिए एसेट बने, खेती वर्तमान परिस्थितियों में कहीं हम पर बोझ न बन जाए, इस दृष्टि से भी राज्य सरकार बहुत तेजी के साथ विचार कर रही है और अपनी एक सफलतम भूमिका का निर्वाह कर रही है। खाद्यान्न के क्षेत्र में हम सरप्लस कंट्री हैं। बाकी भी जितने शेष कृषि उत्पाद हैं, उनके उत्पादन की दृष्टि से भारत या तो पहले नंबर पर है या भारत दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ है। यह हमारे किसानों का परिश्रम, सरकारों की कृषि हितैषी नीतियां, वैज्ञानिकों का अनुसंधान, बढ़ती हुई जागरूकता, इसी का निश्चित रूप से परिणाम है। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी जहां एक ओर देश के सर्वांगीण विकास के बारे में विचार करते हैं, योजना पर काम करते हैं, वहीं गांव, गरीब और किसान पर उनका प्राथमिकता के साथ फोकस रहता है। देश में 86% छोटे किसान हैं। छोटे किसान की ताकत कैसे बढ़े, तो एफपीओ बनाए जाएं, एफपीओ पर 6,850 करोड़ रुपया खर्च किया जाए और हमारा छोटा किसान भी
महंगी फसलों की ओर जा पाए, टेक्नोलॉजी से जुड़ पाए, अपनी उत्पादकता बढ़ा पाए, अपने उत्पादन का प्रोसेसिंग कर पाए और अपने उत्पाद का वाजिब दाम प्राप्त करके अपनी माली हालत सुधार पाए। इस दृष्टि से एफपीओ से लेकर आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक योजना बनाने का भी काम निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन जब हम कृषि के क्षेत्र में विचार करते हैं तो 3 चीजें हमारे ध्यान में आती हैं। कृषक की आमदनी बढ़ना चाहिए, किसानी में आने वाली लागत कम होनी चाहिए और साथ ही साथ जो हमारे कृषि उत्पाद हैं या कृषि उत्पादों में लगने वाले आदान हैं, उन चीजों पर जिन पर हम आयात पर निर्भर करते हैं उसमें हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इसलिए आमदनी बढ़े इस दृष्टि से चौमुखी प्रयत्न किए जा रहे हैं। लागत कम हो इस दृष्टि से ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग पर बल दिया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन जैसी विधाओं को, सूक्ष्म सिंचाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया पर काम किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो आयात पर हमारी निर्भरता है, फिर वो फर्टिलाइजर के लिए हो, सीड्स के लिए हो, पेस्टिसाइड के लिए हो, दलहन के लिए हो, तिलहन के लिए हो, इस सब में भी आत्मनिर्भर भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अब भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए और भारत की ताकत ऐसी बढ़ना चाहिए कि हम दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में खड़े हो सकें। अभी मेरे मित्र अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ऑयल सीड के क्षेत्र में हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। यह सच है। आज हम अनुभव करते हैं, किसी भी वर्कशॉप पे जाओ जो हेल्थ से संबंधित हो तो सभी डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप व्यायाम कीजिए और ऑयल का उपयोग कम से कम करिए। लेकिन जब हम खपत को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि 14-15 के आसपास 16-16.5 किलोग्राम प्रति कैपिटा खाद्य तेलों का उपयोग हमारे देश में होता था और आज 20 लीटर पर कैपिटा का उपयोग हो रहा है, किलोग्राम का उपयोग हो रहा है। खपत बढ़ रही है, यद्यपि सच है कि उत्पादन भी बढ़ रहा है। मुझे मस्टर्ड का रकबा ध्यान है, इस बार मस्टर्ड 87 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। पिछले बार ये 71 लाख हेक्टेयर में थी और उससे पिछले ईयर में ये 61 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। सोयाबीन भी बढ़ रहा है, मूंगफली भी बढ़ रही है, मस्टर्ड भी बढ़ रहा है। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारी जो खाद्य तेल की व्यवस्था है और उसका उपयोग है, उसमें 56% ऑयल पाम का हिस्सा है। मैं समझता हूं ये बड़ा हिस्सा है और पाम ऑयल के लिए हमको इंपोर्ट पर निर्भर करना ही पड़ता है।
मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, उस पर हमारी निर्भरता रहती ही है। यदि पाम ऑयल पर काम हुआ, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज लगभग 3 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल का उत्पादन हो रहा है। लेकिन देश में आईसीआर की स्टडी के अनुसार 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जहां ऑयल पाम का उत्पादन तेजी के साथ किया जा सकता है। इसमें 9 लाख हेक्टेयर एरिया नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट पर भी प्राथमिकता के साथ फोकस किया गया है। और हमने कार्यक्रम बनने के बाद सबसे पहली कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट के साथ गुवाहाटी में की थी। उसमें किसान भी थे, इंडस्ट्री भी थी। किसान को भी आश्वस्ति दी गई, इंडस्ट्री को भी आश्वस्ति दी गई। सबने अपने अपने विचार रखे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जितनी क्वेरीज गुवाहाटी सम्मेलन में आई थी, मंत्रालय के द्वारा उनका समाधान कर दिया गया है। एक आध दो चीजें रह गई हैं जो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उस समिट में नॉर्थ ईस्ट में 2-3 नई इंडस्ट्री ऑयल पाम आधारित लगे, इसका एमओयू भी हुआ। उनके स्थान इत्यादि की व्यवस्था जल्दी की जा रही है और इंडस्ट्री वहां आएगी तो नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर बदलने का भी काम होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अतिरिक्त तेलंगाना हो, आंध्रा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, गुजरात हो, ये सब राज्य भी हैं जहां पर ऑयल पाम का उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए इन राज्यों को आज हैदराबाद में आमंत्रित किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रकार के हितधारक मौजूद हैं और मुझे लगता है कि आप सब लोग वर्किंग सेशन में विमर्श करेंगे और चाहे किसान हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे राज्य सरकार को आने वाली कठिनाई हो, सबको सुना जाएगा और सबका निराकरण किया जाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कल में 29-30 तक 26 लाख हेक्टेयर से ज्यादा ऑयल पाम का रकबा भारत की धरती पर बढ़े। अभी फिलहाल हम दुगना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन मुझे यह देखते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में समिट में ऑयल पाम उत्पादन की दृष्टि से उत्साह देखने को मिला, उससे कई गुना ज्यादा उत्साह तेलंगाना की धरती पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों लगभग महीने भर पहले मैं आया था तेलंगाना मिलेट समिट के लिए, क्योंकि 2023 पूरी दुनिया में मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जाने वाला है। उसकी तैयारी की दृष्टि एक समिट थी और उस समय सोमेश कुमार जी और रघुनंदन जी से मुलाकात हुई थी। उनने उस समय भी कहा था कि ऑयल पाम मिशन की दृष्टि से तेलंगाना अग्रणी भूमिका निभाएगा। और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि जो सोमेश कुमार जी ने व्यक्त किया, जो मंत्री जी ने व्यक्त किया, उसके अनुसार ऑयल पाम की दृष्टि से तेलंगाना नंबर 1 पर चलेगा, ऐसा मैं पूरे विश्वास के तौर पर कह सकता हूं। मंत्री जी ने कुछ विषय रखे हैं, मैं उनको इस अवसर पर एक ही आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी वर्किंग सेशन में जो विषय आएंगे वे, और जो मंत्री जी ने रखे हैं वे, उनके निराकरण की दृष्टि से हम पूरी गंभीरता के साथ प्रयास करेंगे
लेकिन ऑयल पाम मिशन की दृष्टि से संसाधन की कोई भी कमी भारत सरकार के ओर से नहीं आने दी जाएगी। यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भारत सरकार पूरे 28 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम की खेती हो, किसान के घर में समृद्धि हो, खाद्य तेलों की दृष्टि से हमारा आयात पर निर्भरता समाप्त हो, इस दिशा में बहुत ही गंभीर है और उस गंभीरता के साथ हम आपके साथ कदम से कदम मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे और पूरी ताकत से राज्य की पीठ पर भारत सरकार मदद करने के लिए खड़ी रहेगी। ऐसा मैं इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। दूसरी निर्भरता हमारी फर्टिलाइजर पर भी है। केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं वर्तमान में खेती का परिवेश भारत में इतना व्यापक है कि किसी भी एक विधा पर लंबे समय तक चलना और उस पर निर्भर रहना यह हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर से हमारी माटी मुक्त हो, इसकी चर्चा खेती के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में सब जगह बहुत तेजी के साथ चल रही है और इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये रकबा बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। तेलंगाना, आंध्रा, इस क्षेत्र में भी काफी इस दिशा में तेजी के साथ काम किया जा रहा है। आप सबके ध्यान में है और तेलंगाना और आंध्रा का यह क्षेत्र तो नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत उपयुक्त है और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में इस क्षेत्र ने कदम बहुत तेजी के साथ बढ़ाए हैं। पिछली 16 तारीख को आप सब ने एक कार्यक्रम देखा होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे और आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के राज्यपाल हैं, उनका नेचुरल फार्मिंग पर एक लंबा व्याख्यान हुआ और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने भी संपूर्ण देश को यह अनुरोध किया है कि अपनी धरती की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती की ओर उन्मुख होना चाहिए। उसमें पशुपालन भी बढ़ेगा, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा और हम गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से खेती में लागत भी कम आएगी, उत्पादकता कम नहीं होगी और धीरे धीरे जो केमिकल फर्टिलाइजर पर हमारी निर्भरता है, भारत उससे भी मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होगा। मैं इस अवसर पर आप सबको यही निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि का क्षेत्र हमारी प्राथमिकता पर है। कृषि का क्षेत्र भारत की प्रधानता से जुड़ा हुआ है। कृषि के क्षेत्र से हमारी प्रतिबद्धता है और प्रतिबद्धता रहेगी। किसान की माली हालत सुधरे, माटी की उर्वरा शक्ति बढ़े, मानव शरीर के लिए। Thank you very much, sir, for your words of encouragement. Ministry of Agriculture is indeed blessed to have your able leadership and vision to take the oil palm sector forward. On behalf of the Ministry of Agriculture, I express my gratitude for your valuable comments. I now invite Srimati Shubha Thakurji, Joint Secretary, Government of India, for her vote of thanks. Click the link, join the masterclass. I will see how I build my business passion. Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Shri Narendra Singh Tomar ji. Honorable Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Kailash Chaudhary ji. Honorable Minister of Agriculture for Government of Telangana, Shri Niranjan Reddy ji.
Honorable Minister for Agriculture, Government of Kerala, Shri P. Prasad Ji, Honorable Chairman of Raitu Bandhu Samiti, Government of Telangana, Shri P. Reddy Ji, Honorable Secretary, Agriculture and Farmers Welfare, Sanjay Agarwal Ji, Every company will be a tech Honorable company, Secretary DEL and and data DG will be the ICA. fuel that powers this revolution. Are you ready to become a data proficient employee? Introducing the postgraduate program in data science and business analytics from Great Learning, Honorable the Chief University Secretary, of Texas all of you Austin, found and Great invaluable Learning. time to Learn come for this end-to-end skills conference by working and on gave so projects. much of your time. Master widely used tools We are and indeed grateful languages. to Get the mentorship APC from Mr. experts for industry Raghuvandan Rao, insights, to and get Mr. support Reddy, to Director, achieve career Telangana success. Horticulture, With 500 Special plus Chief hiring Secretary, partners, 8,000 plus career Agriculture, transitions, and a and all the delegates 40% present here average today. salary hike, prepare yourself This summit for is the very data-driven important in a future. series of summits Power which we ahead have in your had, career the first with one being in Great Learning. Guwahati Apply and the now. second one being in the great state of Telangana. I also thank the organizers for the displays of the oil palm stalls which have been set up with great effort, and we have learned a lot from all the stalls and all the persons who have explained to us the benefits of oil palm. I'm also thankful to all the delegates of the state governments who have found the time at this busy time of year to come for this conference, and also to the scientists, the ICR representatives, and the oil palm processors, and of course, last but not the least, the very, very hard-working oil palm farmers. We thank you all for coming for this summit, and we hope to make it a great success. Thank you very much. Thank you, ma'am. Request all the participants to join us for lunch. We will be back in the hall by 1:40 p.m. Thank you very much. వైడ్ పెట్టుకో వెనకాల కెమెరా పెట్టుకోండి వైడ్ వెనకాల కెమెరా Request all the participants to note, we are serving high tea right now. The hall is on the left of this hall, and please have your high tea and come back in the next 15 minutes so we can resume the session and then break for lunch. దయచేసి పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా పక్క హాల్లో ఉండే హై టీ కోసం జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. కరెక్ట్గా 15 నిమిషాల్లో మళ్ళీ ఈ హాల్కి తిరిగి వచ్చి ఒక సెషన్ అనంతరం మనం భోజనానికి విరామం ఇవ్వబోతున్నాం. ధన్యవాదాలు. వాళ్ళు టీ తాగడానికి ఒక కాళ్ళంట పడుతుంది of which horticulture area is 11.57 lakh acres, which amounts to 5%. బయట ఉంది చూడండి, బయట పెట్టాలి, చాలా దూరం ఉంది అక్కడ. Of horticultural ఇక్కడ బయట సైడ్కి వెళ్ళండి ఉంటాయి. అన్నది ఖాళీనా? ప్రస్తుతానికి ఖాళీ అని పెట్టుకోండి అన్న. హెచ్ఎంఎస్ పెట్టరు మళ్ళీ నాకే ఇవ్వండి, ప్యాక్ చేసుకోండి. ఎడిట్ కానీ